Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome to a new video. In today's video, we are going to discuss about our Unit 2. So, let's start. The Paper 1 of CA Foundation, Principles and Practice of Accounting, Chapter 2, Theoretical Framework, Unit 2, Ledgers. In our previous video, in the Unit 1 video, we discussed about the journal. And also, we came to know about the term called account, and also we learned about the golden rule of accounting. So, let's revise that first. We all know that after the preparation of journal, ledger can be created. So, to prepare a ledger account or to prepare ledgers, we should be aware of the journals or about the journal entries regarding that account or that sum. So, what is accounting? Accounting is an art. Accounting is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating the financial information of a business enterprise. Accounting जो है, accounting consists करता है number 1 recording, number 2 classifying, summarizing, analyzing, and interpreting. So, first of all, the recording portion, that is in the drawing of journal entries or the passing of journal entries is completed. After the journal entries, we must move to the ledger. After preparation of the journal entries or after preparing the journal, ledgers are created. And in today's video, we are going to know all about ledger. So, as we can understand, after the preparation of journal or after passing the journal entries, a ledger account can be created. And to say as an example, we all know that a single journal entry affects at least two accounts. That is, एक transaction के लिए at least two accounts affect होता है. इसीलिए जो भी journal entry pass हुआ है, उसी के लिए दो account बनेगा या फिर two ledger accounts will be created for a single journal entry. Now, let us revise or let us learn about the golden rules of accounting. What were the golden rules of accounting? The first one is debit the giver and credit the receiver. This was applicable for personal accounts. Personal accounts के लिए जो भी गिवर है, जो भी कुछ एसेट या फिर इनकम देता है, उसे हम लोग डेबिट करते हैं. And the receiver is credited. Second, what comes in is debit. जो भी चीज आता है, but the things or the items which comes in, such as an asset which comes in, is debit. What goes out is credit. जो भी चीज चला जाता है वो क्रेडिट हो जाता है. सपोज एक एसेट जब चला जाता है, एक एसेट को हम लोग क्रेडिट करते हैं. क्यों? क्योंकि एसेट एक डेबिट बैलेंस है. इसीलिए what goes out is credit. For all real accounts, what comes in is debit and what goes out is credit. And the third, expenses and losses are debited. This is applicable for nominal accounts. In case of a nominal account, एक expense या फिर loss को हम लोग debit करते हैं and incomes or gains are credited. All incomes and gains are credited. जो भी इनकम या फिर गेन होगा उसे हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे. उसके बाद आता है व्हाट इज एन अकाउंट. अकाउंट के बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में पिछले यूनिट में हम लोग बात किए थे. व्हाट इज एन अकाउंट? अकाउंट एक टी फॉर्मेट है, टी शेप्ड फॉर्मेट है टू राइट डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस and adjustments of a particular asset or liability or income or expense. एक टी शेप्ड अकाउंट को बनाया जाता है जहां पे एक साइड होता है डेबिट, एक साइड होता है क्रेडिट. एक साइड में हम लोग
रिसीप्ट्स को लिखते हैं और एक साइड हम लोग पेमेंट्स को लिखते हैं। या फिर अब हम लोग जानते हैं व्हाट इज द डेबिट एंड क्रेडिट। वन साइड वी राइट डेबिट एंड अदर साइड वी राइट क्रेडिट। So let us define or let us understand the topic of an account. So what is an account? An account is a T-shaped format. A T-shaped format to write up a journal entry or to post a journal entry. To write up a journal entry. So how an account looks? It has an amount column. To identify a transaction or identify an amount, we draw up a date column. And also as an identifier, we write particulars, and this side is debit and the opposite side is credit. So for your understanding, this side, the left hand side is the debit side. The left hand side of the user or the left hand side of the maker of the account is debit side. This side is the debit side and the opposite side is the credit side. This would be similar. Date, particulars, rupees. This column will consist all the transaction amounts. Similar over here. This will consist the dates to identify these transactions, and this portion will consist of particulars or an identifier text, a small phrase to identify these amounts. This is an overall example of an account. तो हम लोग अब स्टडी मटेरियल का कंटेंट स्टार्ट करते हैं. Let's start with the content of our study material. Unit 2, Ledger. So first of all, let us see an overview. What is a ledger? Ledger, known as the principal books of accounts. एक ledger को हम लोग principal books of accounts के तरीके भी इसी नाम से भी जानते हैं. Ledger, also known as principal books of accounts. Journal, we know journal as an book of original entry. Journal को हम लोग जानते हैं, it is the book of original entry. लेकिन एक लेजर को हम लोग बोलते हैं the principal books of accounts. क्यों? क्योंकि फर्स्ट जर्नल बनता है, उससे लेजर बनता है, और ये जो लेजर है वहां से ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसके बाद आता है बैलेंस शीट, और इन दोनों बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट यूज करके हम लोग एक बिजनेस का एनालिसिस करते हैं. इसीलिए जैसे कि लेजर एक सोर्स है, लेजर इज एक्ट्स एज अ सोर्स फॉर दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आल्सो द बैलेंस शीट. लेजर इज आल्सो नोन एज द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स. So let us study what is related to ledger. Ledger is the process of transferring of ledger includes the process of transferring journal entries into the accounts. First of all, हम लोग journal एक transaction के लिए journal entry जो है वो सीखे हैं, एक journal entry को पास करना. उसी journal entry से दोनों account बनाया जाएगा. We should make two ledger accounts from this journal. Why? Two? Because one transaction affects at least two accounts or two assets or two liabilities, etc. So, ledger includes the process of transferring journal entries into the accounts. The process of transferring this journal entry into two or more accounts includes the ledger forming of ledger. By the way, this process, for an overall view or for an overview, I must say this process is known as posting. This process, the posting, we would learn in detail in today's chapter or today's video itself. This process is known as posting. Next, differences between the totals of debits and credit side is found out as the balance. The difference between totals of debits and credit side is found out as a balance.
कल के वीडियो में या फिर उसके ये जो जर्नल का एंट्री था या फिर जर्नल का जो यूनिट था, Unit-1 ऑफ जर्नल एंट्री, वहां पे हम लोग डिस्कस किए थे एक अकाउंट में, एक अकाउंट जो बनाया जाता है, एक अकाउंट जो बनाया जाता है उसका जो टोटल है, हमारा एक रूल बनाए थे हम लोग। अगर मैं ऐसे थोड़ा क्लियरली ड्रॉ करूं, अगर ये एक अकाउंट है, इस अकाउंट को बनाने को ही हम लोग लेजर, पोस्टिंग ऑफ लेजर या फिर मेकिंग ऑफ लेजर कहेंगे। ये सपोज ये रहा अमाउंट का कॉलम, ये दोनों रहा अमाउंट का कॉलम। यहाँ पे डेट पर्टिकुलर्स LF JF, यहाँ पे डेट पर्टिकुलर्स JF, ये सब लिखा हुआ है। हम लोगों को पता है पिछले वीडियो से कि ये जो अमाउंट कॉलम है, ये हम लोग ने एक रूल बनाया था कि ये दोनों अमाउंट का टोटल जो है वो इक्वल होगा। ये इक्वल्स टू ये, इस साइड का टोटल विल बी इक्वल टू दिस साइड का टोटल। इसी के वजह से ड्यू टू दिस अ क्लोजिंग बैलेंस इज क्रिएटेड। अगर यहां पे ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो यहां पे क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, और अगर यहां पे ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो इस साइड पे क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। और इस दोनों अमाउंट को टोटल होने से ही इस क्लोजिंग बैलेंस को निकल पाना चांस है, इस क्लोजिंग बैलेंस को निकल पाने का चांस रहता है। As we made a rule while making a account in our previous video, in the Unit-1 video, we understood or we decided that the totals of these two accounts will be the same. This will be equal to this, and that is why, due to the differences, due to such a equal sum, the difference between these two columns are created. For example, here it is the opening balance and an amount is given, a transaction amount is given, here are also transactions amounts are given. So total of this column is totaled, and from that this column is subtracted to receive a closing balance, the remaining balance. And from this we came to know about the term called closing balance. If you have any doubt, please refer my Unit-1 video. It is properly explained over there. And this process is said over here. The difference between the totals of debits and credit sides is found as the balance. What balance? The closing balance. Similarly, if opening balance is not given, we can also find out our opening balance if the closing balance is provided. Some of the balances are transferred to the profit and loss account. Some of the balances of some of these ledgers are transferred to profit and loss account. First of all, चैप्टर 1 को जो थियोरी है उसे यूज करके आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कौन सा बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है. Which balances are transferred to a profit and loss account in an accounting period? Yes, if you guessed it right, it is the incomes and expenses. We make a profit and loss account at the year ending or the ending of a financial year. We prepare a profit and loss account, one side of which we write the incomes and the other side we write the expenses to find out our net profit, or the net profit that is generated from the business enterprise throughout the financial year or financial period, accounting period. Remaining are carried forward to the next year. The remaining of the balances, the closing balances, are carried forward to the next year. For example, if this is an account, there are closing balances over here. We ended our books of accounts here. This same balance would be transferred to the next year as an opening balance. एक ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस ही होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एक कंपनी है, एक ट्रेडिंग कंपनी है, उस ट्रेडिंग कंपनी में मेरा जो भी इन्वेंटरीज होगा
वो आज के दिन में जो क्लोज होगा कल के डेट के लिए वो ओपनिंग हो जाएगा। 31 मार्च में जितना भी क्लोजिंग बैलेंस रह जाएगा वही हम लोग का 1 अप्रैल के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इसीलिए क्लोजिंग बैलेंस जो है उसके ठीक उल्टे साइड में, द ऑपोजिट साइड, वी राइट द ओपनिंग बैलेंस। Why? Because in the starting of the previous year or the previous accounting period, we wrote the opening balance in this side itself. And that is why opening balances will be matched with opening balances of the next year. The side would be matched and the closing balance of the previous year will become the balance of the opening balance of the current year. So this was an overview. We are going to learn everything in detail from this part. We are entering into the chapter introduction. So the time for introduction to the concept of ledger. While preparing while preparing the financial statements of a company or any business enterprise, journal is the base. If there is no journal, there is no ledger and there is no existence of the financial statements. But after the passing of journal, the next important thing is ledgers. Without ledgers, the balances of each account cannot be given or cannot be detected. And that is why ledger is also known as the principal books of accounts. After recording the transactions in the journal, recorded entries are classified and grouped by the preparation of accounts. This preparation of accounts is known as the ledger accounts. The books which contains all sets of accounts is known as ledger. The books which contains the all sets of accounts is known as ledger. So, एक लेजर क्या है? लेजर वो बुक को कहा जाता है या फिर उस बुक को टर्म दिया जाता है जिस बुक्स में हर एक अकाउंट को हम लोग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स आर मेड. For example, these 5 accounts for a business are made, and this entire account, these set of 5 accounts, is prepared inside a books of accounts, inside a book, and this book should be termed as the ledger. The book which contains the ledgers of a business enterprise is known as a ledger. It is known as principal books of accounts. The ledger is also known as the principal books of accounts, in which account-wise balance of each account is determined. Account-wise balance of each account is determined in the ledger, and that is why a ledger is known as the principal books of accounts. एक जर्नल को हम लोग जानते हैं द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहां पे एक ओरिजिनल ट्रांजैक्शन को ओरिजिनली रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं जर्नल. और द प्रिंसिपल एंड नाउ द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द प्रिंसिपल बुक्स, the books that are principal or that are main or important for the preparation of financial statements is the ledger, and that is why we term ledger as the principal books of accounts. Now, the specimen of ledger accounts. A ledger account has two sides: debit, left part of the account or left hand side, and credit, the right hand side. So for you, this is the left hand side and this is the right hand side. The left hand side, for example, this is account. We all know an account is created as a T shape. What is the T shape? This is the T shaped. The left hand side of the user or the left hand side of this T is the debit side, and the right hand side will automatically be known as the credit side. This simple format or this simply calls up or forms up an account. This simple format is an account of a determined
balance. For example, cash, bank, assets, liabilities, etc. So, a ledger account has two sides: debit, the left part, and the credit, right hand part of the account. Each of the debit and credit side has four columns. Each debit side, for example, this is a T. This forms up the debit side and this forms up the credit side. Each side, that is, for example, we take the example of debit side, has four columns. So 1, 2, 3 and 4. These each side has four columns, and similarly this is the T shape of debit and credit. The T shape divides debit and credit. In the left hand side, the debit side, there are four columns: 1, 2, 3 and 4. Similarly, in the right hand side, that is the credit side, there would be four columns also, because this side is the mirror of this side. So the credit side will also have four columns: 1, 2, 3 and 4. Number 1 is the date. Number 2, particulars. Number 3, the journal folio, that is the page number from which a journal entry is taken or passed. And number 4 is the amount. So let us now draw up a ledger account, or let us draw up an account. Let's go to our rough area. So this is our rough area, and now we are going to draw up an account. So an account is a T-shaped format. Our T is formed, right? Our T is formed. Sorry. Our T shape is formed. This usually is the debit side. The left hand side is the debit side and the right hand side is the credit side. And this is important. We must write the debit and the credit. Now, we all know that each side has four columns. So now let us only consider the debit side. This is our debit side. This debit side will contain four columns. 1, 2, 3. So this has four columns: 1, 2, 3 and 4. Similarly, the credit side will also have four columns. So the first column, the number 1 column, is the date column. We all have studied that the amount should need a key to be recognized. The amount in the amount section should require a key for the determination or for identifying it as an identifier. So first column is the date, second is the particulars. The date column will have the date of the transaction. Particulars will consist of short phrases to identify the amounts. ये जो यहाँ पे अमाउंट कॉलम में जितना भी अमाउंट्स लिखा जाएगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पर्टिकुलर्स कॉलम में छोटा छोटा फ्रेजेस रहेगा. अब थर्ड कॉलम है जर्नल फोलियो. जैसे कि एक जर्नल में लेजर फोलियो होता है, सिमिलरली एक लेजर में जर्नल फोलियो होता है. लेजर फोलियो में क्या था? लेजर फोलियो में एक लेजर अकाउंट का पेज नंबर रहता था. उस पेज नंबर जिस पेज नंबर पे वो जर्नल एंट्री ट्रांसफर
ट्रांसफर हुए थे। यहां पे जर्नल फोलियो में जर्नल का वो पेज नंबर रहेगा जिस पेज नंबर पे ये अमाउंट का जो जर्नल एंट्री है वो लिखा हुआ है। जिस पेज नंबर पे इस अमाउंट के लिए एंट्री पास किया गया है उस पेज नंबर को हम लोग जर्नल फोलियो में लिखेंगे। And the last but not the least, the last column is the rupees column, that is the amount column. And the most important column, this is the amount column. As we all know, accounts deals with monetary amounts or monetary items. So monetary items are the most important, and that is why this last column is the most important, which will consist of the monetary values of these transactions. The date would be here, short phrases as an identifier or key would be here. Journal folio will have the page number, and the amount section will have the amount or the monetary amount of that transaction. Now, similarly, the credit side. As we all know, credit side will also be the same, similar to the debit side. Well, this credit side will also have 4 columns. The first column is the date column. Second, the particulars column for the short phrases as an identifier. Next will be the journal folio, the page number of the journal, and last the amount column, the section or the column that would hold up the amounts of the transactions. So this is a basic format of a ledger. This forms up a basic example or basic format of a ledger. And mind you, this debit and credit word, this short form of debit and credit should be written. And पिछले journal का video में, in the video of journal, we discussed that every shop or every outlet has its name. इसी तरीके से similarly हर एक दुकान का जैसा नाम होता है उसके ऊपर, हर एक अकाउंट का भी एक नाम होता है, एक लेजर का भी नाम होता है। उस लेजर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो लेजर है ये किसका लेजर है, किस चीज का या फिर किस अकाउंट का लेजर है, उसे हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक अकाउंट या फिर किस चीज का अकाउंट है, ये हर एक अकाउंट का नेम होता है। इसी तरीके से इस अकाउंट किस चीज का अकाउंट है, इसी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, टू आइडेंटिफाई द अकाउंट वी गिव अ नेम टू इट as a heading. For example, I say this is a cash account. All the cash transactions would be recorded under this or recorded within this account. So, a journal overall consists the word written, the debit, credit, to determine or to show the debit side and the credit side. It would have the T format made. It would carry the name of the account. Each side of the T, each side, one debit side and one credit side. Each side will have 4 columns. Number 1 is the date column. Number 2 is the particulars column. Number 3 is the journal folio column. And number 4 is the amount column. Similarly, in the credit side, date column, particulars column, journal folio column, and amount column. This forms up the account. For an example, we took cash account. Cash क्या है? Cash is an asset. इसीलिए cash एक asset है, इसीलिए हम लोग कहेंगे what comes in is debit and what goes out is credit. जब cash receive होगा, जब cash बिजनेस के अंदर आएगा, तब हम लोग उसे डेबिट करेंगे. एंड व्हेन द एसेट दैट इज द कैश विल गो आउट ऑफ द बिजनेस, जब कैश एक एसेट के रूप में उस बिजनेस से एग्जिट करेगा या फिर बिजनेस से निकल जाएगा, उसे हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे.
इसीलिए इसी तरीके से हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक कैश का इनफ्लो डेबिट साइड में आएगा और हर एक कैश का आउटफ्लो क्रेडिट साइड में आएगा। इसी तरीके से हमारा अकाउंट जो है वो फिल्ड अप हो जाएगा। और हम लोगों का एक रूल था, हम लोग ने एक रूल बनाए थे, अमाउंट का कॉलम दोनों साइड में इक्वल होगा। डेबिट साइड में एंड क्रेडिट साइड में अमाउंट का कॉलम इक्वल होगा। इसीलिए यहां का जो वैल्यू या फिर अमाउंट है, यहां पे भी सेम अमाउंट होगा। और यहां पे हमारा ओपनिंग बैलेंस था। क्यों ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में था? क्योंकि कैश एक एसेट है, इसीलिए डेबिट साइड में उसका ओपनिंग बैलेंस रहेगा। यहां पे ओपनिंग बैलेंस है, उसका मतलब क्या है? यहां पे क्रेडिट साइड के लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस होगा। और क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा? हाउ द क्लोजिंग बैलेंस वुड बी कैलकुलेटेड? We should add up the debit side, then reduce the credit balances. We would get this. So by doing such a calculation, the debit side minus the credit side, we would get the closing balance. And after that, if we see that this column would be equal to this column, and this writing of the equal, the rule that we made to write these two equal would become successful, it would be proven. So back to the study material to understand in detail. A ledger account has two sides. A ledger account has two sides. One is the debit, the left side, and the other one is the credit, the right hand side. Each of the debit and credit side has four columns: the date, particulars, journal folio, and amount. Journal folio क्या है? Journal folio is the page number of the journal entry that is transferred to this ledger account. So a fresh diagram is given. We can now relate. First, the name of the account is given. Debit is written in one side, and in the opposite side credit is given. In the debit side, and this total T diagram is made. This is the total T diagram. This forms up a this forms up an account. The T diagram is made, and each side of the T, the right hand side should have four columns, and the left hand side will also have four columns. Sorry, I wrote the opposite. The left hand side will have the four columns, and also the right hand side will have four columns. That is why, what are the four columns? Number one is the date. Number two is the particulars. Number three, journal folio. And number four, the amount column. So our four columns are made: date, particulars, journal folio, and amount. This forms our account. And in this account, the transactions would be given. For example, if this is a cash account, हम लोग कैश का एग्जाम्पल समझने के लिए ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, टुडे your parents gave you ₹10. I would repeat my example. Today your parents gave you ₹10. With that ₹10, you decided to start a business of pen. So first of all, as cash is an asset, we all know cash एक asset ही है ना. A cash is an asset, we all know that, and that is why every inflow of cash would be given in the debit side, and every outflow
would be given in the credit side. What comes in is debit and what goes out is credit. Similarly, when your mother or your father, your parents are giving you rupees 10, it would be an inflow of cash. So we would be giving today's date, then we should give our amount. To understand, we should also write a small phrase, and the debit side is given which starts with the phrase to capital account, obviously, because you are of business mind, but your parents gave you the money to you first, the personally, आपके पेरेंट्स आपको वो 10 रुपीज दिए थे पर्सनली, और आपने डिसाइड किए कि आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इसीलिए एज योर पेरेंट्स गेव यू द रुपीज 10, but you decided to start a business, and that is why your rupees 10 would be invested in the business. Your rupees 10 would be invested in your business. And what is that entry named? Cash or bank account debit to capital account. जब आपका कुछ इनफ्लो होता है या फिर आप बिजनेस में आप खुद के बिजनेस में कुछ अमाउंट को एंटर करते हो या फिर इन कैश का इनफ्लो करते हो, उसका एंट्री ऐसा ही होता है ना, कैश अकाउंट डेबिट। आई होप आपका जर्नल का जो पोर्शन है वो पूरा क्लियर है, जर्नल का कंसेप्ट पूरा क्लियर है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यहां पे आएगा रुपीज 10, यहां पे आएगा रुपीज 10। तो ये है एक जर्नल एंट्री। इस जर्नल एंट्री को, ये जो सिंपल एक जर्नल एंट्री है, इसे हम लोग को लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। यहां पे हो जाएगी, ये कैश अकाउंट है। अब समझते हैं कैसे रहेगा पूरा जो हिसाब किताब है। इस जर्नल का कुछ डेट दिया रहेगा। दिस जर्नल एंट्री विल हैव अ डेट। ये जो डेट है वो सेम डेट यहां पे आ जाएगा। उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में ये एंट्री होगा, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट, वहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोगों को लिखना है टू कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमारा जर्नल जो है वो कह रहा है कैश अकाउंट जो है उसके डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट लिखना है, और अमाउंट क्या रहेगा, रुपीज 10। ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री का लेजर या फिर जर्नल अकाउंटिंग का पोस्ट कर दिए हैं हम लोग। नेक्स्ट, आप डिसाइड किए आप दो पेन खरीदोगे। यू डिसाइडेड टू परचेज 2 पेन फ्रॉम अ शॉप एंड ईच पेन विल कॉस्ट यू ₹5। तो यहां पे जर्नल एंट्रीज का क्या होगा, यू डिसाइडेड टू परचेज 2 पेन्स ईच ऑफ ₹5 इन कैश। यहां पे होगा पेन क्या है, पेन एक इन्वेंटरी है या फिर स्टॉक है। यहां पे पेन अकाउंट नहीं होगा, यहां पे इन्वेंटरी अकाउंट होगा। क्यों? इन्वेंटरी को आप ट्रेड करके बिजनेस करते हो, पेन आपके लिए एसेट भी है लेकिन इन्वेंटरी भी है, इसीलिए इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये और एक जर्नल एंट्री हो गया, ₹10 कैश जो आया था, जो भी कैश आया था वो यहां पे चला गया। यहां पे क्या है, इन्वेंटरी अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोगों को लिखना है, क्या लिखना है, टू कैश अकाउंट। लेकिन हम लोग तो बना रहे हैं कैश अकाउंट। हम लोगों के सामने खुला है कैश अकाउंट, और हम लोगों को पता है कि एक जर्नल एंट्री के लिए
दो अकाउंट अफेक्ट होता है, इसीलिए कैश अकाउंट में भी ये जो एंट्री है इसे लिखना पड़ेगा। हम लोगों को ये भी पता है, वी ऑल्सो नो दैट वॉट गोज आउट इज क्रेडिट। कैश या फिर एक एसेट जब बिजनेस से बाहर निकाल जाता है उसे हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसीलिए एज कैश इज गोइंग आउट एंड एज आवर जर्नल एंट्री इज सेइंग अस टू राइट द कैश अकाउंट in the debits in the credit side, we are writing the date is given and we are writing the कैश अकाउंट में कैश अकाउंट नहीं होगा, यहां पे कैपिटल अकाउंट हो गया था, इसीलिए यहां पे हम लोग लिखेंगे इन्वेंटरी अकाउंट। इन्वेंटरी अकाउंट। लेकिन ये जो जगह है ये थोड़ा खाली खाली नहीं लग रहा, यहां पे डेबिट साइड में 2 लिखा हुआ था, ये 2 लिखा हुआ था, इसीलिए ये जो गैप है ये फिल्ड अप हो गया। क्यों? यहां पे भी 2, लेकिन यहां खाली खाली है, इस जगह को हम लोगों को फिल अप करना पड़ेगा। तो क्या लिखे इस जगह पे? यहां पे आएगा बाई। हर एक क्रेडिट साइड का एंट्री में बाई लिखा हुआ होता है। क्यों? कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बट हु इज डूइंग द क्रेडिट? बाय इन्वेंटरी अकाउंट। कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय इन्वेंटरी अकाउंट। आप ये जो टर्म है या ये जो फ्रेज है अच्छे से समझ लेना। कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय इन्वेंटरी अकाउंट and that is why in the credit side of the cash account we are writing by inventory account। इसीलिए हमारा सेकेंड एंट्री हो जाएगा डेट यहां पे, और यहां पे आएगा बाय इन्वेंटरी अकाउंट। आई होप अब सबको पता है इन्वेंटरी और स्टॉक सेम ही वर्ड है। और अमाउंट में क्या आ जाएगा? यहां पे 10 रुपीज था, यहां पे भी 10 रुपीज आएगा। हमारा क्रेडिट साइड हो गया है खत्म। अब आप डिसाइड किए कि ये जो आपके पास जो पेन है, आपके पास 2 पेन का इन्वेंटरी है। यू विल सेल दिस इन्वेंटरी ऑफ 2 पेन्स फॉर ₹7 ईच। आप ₹7 में ईच पेन, एक एक पेन को आप ₹7 में सेल करोगे। वहां पे आपका एंट्री क्या होगा? वहां पे आपका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। क्यों? कैश तो आ जाएगा 14 रुपीज, आप ₹7 में दोनों पेन खरीदोगे, बेचोगे। यू विल सेल द 2 पेन्स फॉर ₹7 ईच। कैश वुड, देयर विल बी एन इनफ्लो ऑफ कैश, कैश आएगा बिजनेस में, इसीलिए कैश डेबिट होगा। व्हाट कम्स इन इज डेबिट फॉर अ रियल अकाउंट, दैट इज व्हाई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्यों? यहां पे सेल हो रहा है। जब परचेज होगा हम लोग परचेज अकाउंट लिखेंगे। यहां पे हम लोग जो इन्वेंटरी लिखे थे, यहां पे हम लोगों को और भी अच्छे से दिखाने के लिए हम लोग परचेज अकाउंट लिखेंगे। क्यों? यहां पे परचेज हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट। एक बिजनेस के लिए परचेज एंड सेल यही है इंपॉर्टेंट दोनों कॉन्सेप्ट, या फिर इंपॉर्टेंट दोनों टर्म यही है, इसीलिए परचेज और सेल को हम लोग परचेज और सेल लिखेंगे। यहां पे भी सिमिलरली इन्वेंटरी नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा परचेज। क्यों? वो इन्वेंटरी का परचेज है। ये याद में रखना, ये याद रखना इस पॉइंट को। हम लोग जब परचेज या फिर सेल होता है इन्वेंटरी को नहीं लिखते हैं। जब परचेज होता है इन्वेंटरी का हम लोग लिखते हैं परचेज अकाउंट, जब इन्वेंटरी सेल होता है हम लोग लिखते हैं सेल अकाउंट। इसीलिए यहां पे हो जाएगा परचेज अकाउंट। सिमिलरली यहां पे हो गया परचेज, यहां पे सेल तो आएगा ही। क्यों? इन्वेंटरी का सेल जो हो रहा है इसीलिए 10 रुपीज यहां पे सेल आएगा। अमाउंट कितना होगा? 14, 7 into 2 आ जाएगा 14। तो एंट्री क्या हो गया?
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कैश अकाउंट का डेबिट साइड में, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आके ये डेट देके हम लोगों को लिखना पड़ेगा टू सेल अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमारा जो जर्नल है वो वही कह रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट वुड बी द अमाउंट, 14 रुपीज। अब आपका दिन खत्म हो चुका है, समझ लीजिए आज का दिन ही आपका अकाउंटिंग पीरियड था। आपका दिन खत्म हो चुका है, लेकिन आपके अकाउंटिंग पीरियड एंड हो चुका है। उसका मतलब क्या है, इस जो अकाउंट है इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। यहां पे हम लोगों को रूल था, एक रूल बनाया थे हम लोग, यहां पे ये दोनों साइड इक्वल होगा। तो इक्वल करने के लिए जितना भी मैक्सिमम, जिस साइड में मैक्सिमम टोटल हो रहा है उस टोटल को हम लोग लिखेंगे 10 प्लस 14 मतलब 24, और इस साइड में भी 24। क्यों? डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल हर समय, एवरी टाइम इक्वल होता है। द डेबिट ऑफ द टोटल्स ऑफ डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड इज ऑलवेज सेम इन एवरी केस, इन एवरी अकाउंट। इसीलिए हम लोग दोनों साइड को इक्वल कर दिए हैं। अब क्या करना होगा, अब करना होगा बैलेंसिंग। क्यों बैलेंसिंग करना पड़ेगा, कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए। टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश अकाउंट वी नीड टू बैलेंस। यहां पे डेट आ जाएगा और क्या होगा, बाई। क्यों बाई? क्रेडिट साइड के हर एक एंट्री में हम लोग बाय लिखते हैं, डेबिट साइड में हम लोग टू लिखते हैं, सिमिलरली क्रेडिट साइड में हम लोग बाय लिखते हैं। बाय बैलेंस, क्यों, ये बैलेंस हो जाएगा। और यहां पे और एक टर्म आता है बैलेंस, सी डी। सी डी का मतलब कैरेट डाउन। यहां पे जो क्लोजिंग बैलेंस है, सॉरी, यहां पे जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वही यहां जाएगा, नीचे कैरेट डाउन होगा। इसीलिए बाई बैलेंस कैरेट डाउन, या फिर क्लोजिंग बैलेंस को भी हम लोग कहते हैं बाई बैलेंस, सी डी। यहां पे बैलेंस क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा 24 माइनस 10, या फिर 10 हम लोग डेबिट साइड को या फिर मैक्सिमम साइड को टोटल करते हैं, वहां से क्रेडिट साइड को लेस करते हैं। तो फिर हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, 10 प्लस 14, 10 प्लस 14, यहां से 10 प्लस 14 24 आएगा, यहां पे हमारा 24 आएगा। यहां से ये जो 10 है ये माइनस हो जाएगा, यहां पे हम लोगों का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 14। अब देखिए ये जो टोटल हम लोग सेम सेम लिखे थे ये प्रूफ हो चुका है। सो 10 प्लस 14 माइनस 10 इक्वल्स टू 14, क्लोजिंग बैलेंस आ गया फाइनली। यही है एक कैश अकाउंट, या फिर एक अकाउंट को हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं या फिर फॉर्म करते हैं एक अकाउंट को। नाउ पोस्टिंग, द प्रोसेस of transferring the debit and credit items from journal to classified accounts in the ledger is known as posting. The process of transferring debit and credit items from journal to classified accounts. यहां पे जर्नल अकाउंट से, जर्नल जो भी अकाउंट था उस जर्नल में जितना भी एंट्रीज है वो एंट्रीज हम लोग लेजर में पास किए या फिर लेजर में कैरी किए। इसी प्रोसेस को, इसके बीच में जो प्रोसेस हुआ इसे हम लोग पोस्टिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द जर्नल एंट्रीज इनटू क्लासिफाइड अकाउंट्स इज नोन एज पोस्टिंग। Rules regarding posting of entries in the ledger.
इस पोस्टिंग के लिए भी कुछ रूल को फॉलो करना होता है और वही रूल्स को अब हम लोग पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं, बस 3 रूल्स ही है, 1, 2 एंड 3। Rule number 1. Separate account is opened in ledger book for each account and entries from ledger posted to respective account accordingly. Entries from journal, यह जर्नल होगा, यहाँ पे आप जर्नल लिखेंगे। लेजर में एंट्री होता है लेकिन पोस्ट होता है जर्नल से। यहाँ पे अगर आप लोग जर्नल लिखेंगे आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। दिस वुड बी easier to understand. Separate account is opened in ledger book for each account and entries from journal posted to separate accounts respectively. So this is our rule number 1. क्या है रूल नंबर 1? अगर एक जर्नल एंट्री है, इस जर्नल एंट्री के लिए जो भी पोस्टिंग होगा वो सेपरेट अकाउंट में होगा। एक अकाउंट के लिए एक सेपरेट एक या फिर एक बैलेंस के लिए एक अकाउंट क्रिएट होगा। फॉर एग्जांपल, एक होगा कैश अकाउंट, एक होगा परचेज अकाउंट, एक होगा सेल्स अकाउंट, एक होगा कैपिटल अकाउंट। सो डिफरेंट अमाउंट्स के लिए डिफरेंट अकाउंट्स क्रिएट किया जाएगा। फॉर डिफरेंट अकाउंट्स और डिफरेंट बैलेंसेस देयर वुड बी different accounts that has to be made within a ledger, within a book of ledger. This was our rule number 1. Now rule number 2. It is a practice to use words to and by while posting transactions in the ledger. Ledger account में जब हम लोग ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हैं हम लोग दोनों वर्ड को यूज करते हैं, टू एंड बाय। ये ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। टू कब यूज होता है? टू इज यूटिलाइज्ड व्हेन ट्रांसफरिंग एन अमाउंट टू द डेबिट साइड। सिमिलरली जब हम लोग क्रेडिट साइड में कुछ बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड में बाय आता है। So, it is a practice to use words to and by while posting transactions in the ledger. The word to is used in the particular column with the accounts written on the debit side. कहाँ पे लिखा जाता है? Particulars column में लिखा जाता है और किस साइड में? Debit side में। While by is used with the accounts written in the particular columns of the credit side. बाय हम लोग यूज करते हैं पर्टिकुलर्स कॉलम में, लेकिन किस साइड में? क्रेडिट साइड में। These to and by do not have any meaning but are used to the account debited and credited. इस to और by का मीनिंग तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हम लोग इसे यूज करते हैं एक अकाउंट को अच्छे दिखने के लिए या फिर एक अकाउंट को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम लोग ये दोनों फ्रेज या फिर ये दोनों वर्ड टू एंड बाय यूज करते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ ज्वेलरी। ज्वेलर का काम तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हम लोग उसे यूज करते हैं ऐसे ही हम लोग यूज करते हैं। इसीलिए टू और बाय को एक अकाउंट का ज्वेलरी भी कहा जाता है। नाउ द थर्ड रूल इज द कंसर्न्ड अकाउंट डेबिटेड इन द जर्नल should also be debited in the ledger, but reference should be of the respective credit amount. जर्नल में जो भी एंट्री डेबिट हो रहा है उस सेम अकाउंट को लेजर में भी डेबिट करना है, लेकिन किस अमाउंट से? जितना अभी अमाउंट क्रेडिट हो रहा है उस अमाउंट से। The amount would be the credit amount. The amount that is credited would be transferred, but the account which is debited in the journal would be similarly debited in the ledger book.
Now, balancing an account. At the end of each month, at the end of each month or year or any particular day, that is the end of an accounting period, it may be necessary to ascertain the balance in an account. एक दिन के एंड में या फिर एक मंथ के एंड में या फिर एक ईयर खत्म होने के बाद एक अकाउंट का जितना भी बैलेंस है उसे निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? उसी बैलेंस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर और बैलेंस शीट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। This is not a too difficult thing to do. Suppose a person has bought goods worth rupees 1000 and has paid only rupees 850. He owes rupees 150 and it is the balance in his account. 1000 रुपीज का गुड्स खरीदा हुआ था, उस 1000 रुपीज से रुपीज 850 पेमेंट हो चुका है, रुपीज 850 का। उसका मतलब क्या है? बैलेंस रुपीज 150 अभी लायबिलिटी है। इसी सेम तरीके से सेम कैलकुलेशन को यूज करके हम लोग एक बैलेंस, एक अकाउंट का बैलेंस को निकालेंगे। We would be using the same technique in determining the closing balance or the balance of an account. To ascertain the balance in any account, what is that? Means to ascertain the balance of any account, what is done is a total the two sides and ascertain the difference. The two sides should be totaled and then the difference should be ascertained. हम लोग दोनों साइड का टोटल करते हैं और वहां से जो रिमेनिंग साइड है या फिर क्लोजिंग बैलेंस का जो साइड है उसे हम लोग डिफरेंस माइनस कर देते हैं डिफरेंस के लिए। द डिफरेंस इज द बैलेंस। द डिफरेंस between the two sides, that is the difference between the debit side and the credit side of an account, is the balance. So we can make a note over here to understand. Difference between debit and credit side is the balance. The difference between debit and credit side of an account is balance. So very simply we would be able to determine the balance of an account. The credit balance is written on the debit side. If there is a credit balance, the closing balance will be written in the debit side. And if there is a debit balance, it will be written in the credit side. So this is important. The credit balance is written on the debit side as to balance CD. CD means carried down. We have already discussed. By doing this, the two sides will be equal. The totals are written on the two sides opposite one another. The credit balance is written on the credit side as on the credit balance is written on the debit side. Credit balance is written on the debit side as by balance BD. Okay, we have already done this. The credit side would be written in the debit side and opposite to it the debit balance would be written in the credit side. The debit balance would be written in the credit side as by balance BD. So after doing this, our balance, our ledger account would be balanced or would be complete. BD means brought down. For example, if I draw everything up, सपोज ये एक अकाउंट है, ये एक बैलेंस का अकाउंट है। यहां पे हमारा था ओपनिंग बैलेंस, यहां पे है
क्लोजिंग बैलेंस क्यों? ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट साइड में रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में रहेगा। ये जो क्रेडिट साइड में बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस ही है। क्यों? क्योंकि ये जो शायद ये कैश अकाउंट था या फिर और कुछ एसेट का अकाउंट था, इसीलिए उसका डेबिट बैलेंस था, लेकिन क्लोजिंग के टाइम में वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा और यही अमाउंट यहां पे आ जाएगा। ये जो क्लोजिंग अमाउंट है, इस क्लोजिंग अमाउंट को कैसे लिखते हैं? बाई बैलेंस सीडी कैरेड डाउन। और ये जो ट्रांसफर हो जाता है नीचे, इसे हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब क्या है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। The credit balance is written, the debit balance is written on the credit side as the buy balance BD. The credit balance is written on the credit side as buy balance BD. This is the opening balance for the new period. The debit balance similarly is written on the credit side. So, this is an entire treatment. This is a single treatment. The credit balance is written on the debit side, written as to balance BD, to balance CD. CD means carried down. By doing this, two sides will be equal. The totals are written on the two sides opposite one another. Then the credit balance is written on the credit side as buy balance BD. BD means brought down. This is the opening balance for the new period. The debit balance similarly is written on the credit side as buy balance CD. The totals then are written on the two sides as shown above as the debit balance written on the debit side as to balance BD as the opening balance of the new period. It should be noted that nominal accounts are not balanced. Nominal account जो है वो balance नहीं होता है. Nominal account क्या होता है? Nominal account directly profit and loss account में transfer होते हैं. The balance in the end are transferred to profit and loss account. Nominal account क्या है? Nominal account for example वो accounts है जिसका कुछ income, expense, profit या फिर loss होता है. उसी account को हम लोग nominal account कहते हैं. For example, the example of a nominal account is any expense. For example, administrative expense या फिर advertising expense. एक expense है advertising expense. Advertising expense जो है वो debit balance होगा. क्यों? क्योंकि वो एक expense है. And number 2, उसका कुछ closing balance नहीं रहेगा. Advertising जो expense है वो तो एक asset नहीं है ताकि उसका एक क्लोजिंग बैलेंस रहे. एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो है वो इस साल के लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, इसीलिए वो जो अकाउंट का बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा. वो बैलेंस में क्लोजिंग बैलेंस के जैसा नहीं आएगा. ओनली द पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स अल्टीमेटली शो बैलेंसेस. Only the personal accounts and the real accounts show closing balances or the opening balances. In the illustration given, you will have noticed that the capital account, the purchasers account, sales account, discount account, the rent account, and the salary account has not been balanced. The capital account will have to be adjusted for profit and loss, and that is why it has not been balanced yet. कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस से बैलेंस होगा. जो भी प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल से ऐड होगा या फिर जितना भी लॉस होगा वो कैपिटल से माइनस होगा. इसीलिए कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंसिंग नहीं होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है. सो वी आर डन विद आवर चैप्टर. वी आर डन विद द थ्योरी पोर्शन ऑफ लेजर. In the next video we will be continuing this chapter and we will be solving a sum.
for our ease and ease of understanding, we will be solving a sum. Now let's summarize. Process of transferring journals entries in the accounts opened in ledger account is called posting. The process of transferring journal entries in the accounts of ledger is known as posting. लेजर इज नोन एज द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एक लेजर को हम लोग प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के नाम से भी जानते हैं. अ लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इट प्रोवाइड्स फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग टू एन एनी इंडिविजुअल अकाउंट. लेजर अकाउंट जो है वो एक बैलेंस का, एक एक्सपेंस का, या फिर एक इनकम या फिर एसेट या फिर लायबिलिटी का पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है. एक इंडिविजुअल अकाउंट का टोटल इंफॉर्मेशन, एंटायर इंफॉर्मेशन एक लेजर अकाउंट देता है. द टोटल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी एसेट, एनी लायबिलिटी, एनी इनकम और एनी एक्सपेंस is given by the ledger, and that is why it is known as the principal books of accounts. Now the last summary: the differences between the totals of debits and credit sides is found out as the balance. We have already written this. The difference between the totals of debit and credit sides is the balance. Some of these balances are transferred to the profit and loss account, and some are carried forward to the next year, that is shown in the balance sheet depending upon the nature of the account. कुछ balances, कुछ लेजर का balances profit and loss account में चला जाता है और कुछ अकाउंट का बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंस के तरीके से दिखाई देता है ताकि वो बैलेंस शीट में शो हो सके. So here comes the end of our chapter 2, unit 2 of chapter 2, ledgers. In the next video, we will be continuing this chapter to solve an interesting sum. So thank you for watching. If you have any comments, if you have any suggestions or feedback, please give a comment section, give that info to me in the comment section. If you liked my video, please give this video a like and subscribe to this channel for more such videos. Thank you.